Hello everybody. I hope you all are doing well. So my today's topic is on building a good immune system to fight coronavirus. Okay, let me tell you that immune system is something that you need to build. It should be you should have a stronger immune system every time. So whether it is this particular situation or no, even in the future, a strong immune system is definitely going to help you. Whatever news channels that I've been watching or whatever articles that I've been reading, the doctors and the experts are of a view that this particular virus, the COVID-19, is definitely it will stay there for some time. Okay, जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं निकलती, जब तक इसके रिसर्च जो है they are not very much successful, definitely there are chances that this particular virus is going to stay. And it is very important for us to develop a very good immune system so that we can fight this particular virus. Now, before I start, let me tell you that immune system is something that deteriorates with age. Correct? So definitely हम ये notice करते हैं that as we age, as we become older, there is a decline in the immune system. There is a decline in the ability of the body to fight virus or infection. Okay, so definitely it is very important for everyone to develop a very good immune system, to boost your immune system. Okay, now what are the ways, what are the things that you will be doing to improve your immunity? Okay, not only in this situation, in the current situation, but also later on. Before I start with all the important points, let me remind you of certain things. Let me recollect whatever that I said in the previous video. Now in the previous videos I have always said that who are those people who are at high risk. So those people who are at high risk are people suffering from diabetes, lung problems, lung issues, correct, liver problems, cardiac issues, morbidly obese people, those people who have a habit of smoking and even alcohol consumption. Okay, तो ये सारे लोग जो है ये all these people they are at high risk of developing or they are at high risk of getting infected due to this particular virus. Okay, so it is important, this is the right time to build an immune system. Correct? Right now we have no other option but to develop a very good immune system. So what are the things that you are going to pay attention to? आप कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे? First thing, it is very important to improve your diet. Your immune system will develop only when you improve your diet. Okay, this is the first step. Definitely there are other factors also, but वो मैं बाद में बोलूँगा. Correct? So we need to अपने diet में improvement क्या लाना है? So we need to include such things which are filled with antioxidants and which have a anti-inflammatory effect on your body. तो हमको ऐसी चीज़ें खानी है. Correct? Like for example, we need to include those vegetables and fruits which are rich in beta carotene. We know that beta carotene is an antioxidant which basically converts into vitamin A. You all know about vitamin A, correct? It's a very good antioxidant. We need to eat such things which are rich in ascorbic acid, vitamin C. We know about vitamin C. It is a very good antioxidant for the body. Correct? Not only that, we need to also include other stuff also. दूसरे चीज़ों में जिसमें which will have an anti-inflammatory effect. तो ऐसी चीज़ भी हमको ऐड करनी चाहिए. So like for example, what are those things which has got anti-inflammatory effect? जैसे for example, you have the turmeric, haldi, ginger, correct? Then you have something like spinach, okay, then sweet potato, broccoli, okay, then tomatoes. Okay, let me tell you, tomato में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, उसमें लाइकोपिन होता है. So it contains good amount of lycopene which has got a very good anti-inflammatory effect on the body. उसके अलावा omega 3 ये आप ऐड कर सकते हो. You can also add nuts like walnuts, almonds. You can add seeds. Okay, if you look at my post
मैंने अगर इफ़ यू लुक एट द IFSI पोस्ट दैट आई एम पुटिंग राइट नाउ, ओके, इन माई मील्स आई ऑलवेज रिकमेंड सीड्स, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, करेक्ट, यू कैन हैव द फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, ओके, ये सारे दे आर फिल्ड विद म्यूफा एंड प्यूफा बेसिकली, ओके. You can, as per the season right now, you can even add the watermelon seeds. Let me tell you that watermelon seeds, they are a very good source of zinc, as well as they are a very good source of mufa and pufa, correct. So ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. You can also add yogurt in your diet. Yogurt जो है, it has got a probiotic effect, okay, it will improve your gut health. तो ये अगेन इट विल कंट्रीब्यूट टू योर इम्यून सिस्टम, इन डेवलपिंग अ गुड इम्यून सिस्टम. यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. आपको फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है, ओके. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द एंटीबॉडीज विच आर देयर इन द बॉडी. एंटीबॉडीज मतलब क्या? एंटीबॉडीज आर दोज प्रोटीन्स विच विल फाइट इन्फेक्शन बेसिकली. दे आर ऑल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ओके. तो ये जो एंटीबॉडीज जो है, इनके डेवलपमेंट के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन इन योर डाइट, ओके. प्रोटीन डेफिसिट डाइट अगर है, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम, योर इम्यूनिटी विल ड्रॉप, ओके. सो यू नीड टू हैव प्रोटीन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. along with that it is very important to reduce simple carbohydrates, okay. और मैं तो बोलता हूँ कि एलिमिनेट करो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट करो. वाई? यू नीड टू ऐड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन मॉडरेट अमाउंट. वो भी मैं बोल रहा हूँ मॉडरेट अमाउंट में, ओके. सो वाई यू नीड टू एलिमिनेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? इट विल हेल्प यू टू मेंटेन प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल्स, इट विल हेल्प यू टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट. इसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा मेंटेन होगा. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट करो, ओके. Add fibers, add complex carbohydrates in moderate amount. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. There is one more thing that I need to point out here. You can add something like अश्वगंधा. अश्वगंधा जो है, ओके, ये भी एक आपको बहुत मदद करेगा. It will keep the cortisol levels low. आपको पता है cortisol is a stress hormone जो बॉडी में ब्रेक डाउन करता है, करेक्ट है. So it will keep the cortisol levels low. It will improve your immune system. Ashwagandha is said to improve your immune system. So all these things are very very important, and it is very important to make a change in the diet, okay. And I think now this is a high time now. You need to work on your diet. Second thing that you need to work on, you need to exercise, okay. आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. क्यों एक्सरसाइज करना ज़रूरी है? Why is it so important to exercise? Again, I have an entire explanation here again. एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर होता है, ओके. सो व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ऑर्गन्स एंड द मसल्स वुड बी बेटर, ओके. योर ऑर्गन्स and your muscles will basically not degenerate because the supply of nutrition is better, the supply of nutrients is better, okay. Not only that, exercise is also said to remove toxins from your body, okay. तो आपके बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स है जो हमको बीमार करते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए भी एक्सरसाइज मदद करती है. सो अगेन दिस इज वन मोर थिंग. थर्ड थिंग, exercise helps in releasing feel good hormones. So feel good hormones जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, इसके वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, ओके. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लॉकडाउन, ओके. लॉकडाउन के पीरियड में वी डेफिनेटली स्ट्रेस इज देयर एवरीवेयर राइट नाउ. पीपल आर स्ट्रेस्ड, दे आर स्ट्रेस्ड फॉर देयर जॉब्स, ओके, फॉर देयर बिजनेस, ओके, फॉर देयर ऑक्यूपेशन. डेफिनेटली स्ट्रेस इज देयर, टेंशन इज देयर. सो डेफिनेटली workout is going to help you out, okay. So around 45 minutes to 50 minutes of exercise, whether you are into weight training or whether you are into cardio or you do little bit of yoga, okay, but do exercise, okay. Exercise karo, you will feel better,
and this will also help you in improving your immune system. Correct? Third thing that you need to improve is you need to have proper sleep. 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It is very important. Okay? If you don't get proper sleep, what is going to happen? You will be exhausted, you will be tired. Okay? Again, that will create lot of problems in the immune system. Your body won't recover. आपकी immunity भी recover नहीं होगी. So again, that is going to cause problems. So it is very important to have a good sleep. Okay? Next thing, keep yourself hydrated. तो बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दो. स्पेशली अभी समर टाइम है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वाटर. ओके, कीप द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ योर बॉडी प्रॉपर, नॉर्मल. ओके, इट शुड बी हेल्दी. सो प्लीज ट्राई एंड डू दिस. ओके, नेक्स्ट थिंग, दिस इज द राइट टाइम टू प्रैक्टिस योर हॉबीज so that there is no stress. ओके, तो आपको जो भी हॉबीज़ है, रीडिंग, लिसनिंग टू गुड म्यूज़िक, पेंटिंग, ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस विल रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल्स. करेक्ट? वन मोर थिंग, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ मेडिटेशन, it is very very important right now. Meditation is it's a very good thing to reduce stress. तो meditation अगर आप करते हो, very nice. करेक्ट? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. करेक्ट? स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल कंजम्पशन. देर आर सर्टन थिंग्स दैट आई नीड टू टेल यू. लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट चेन स्मोकर्स are definitely at high risk of getting infected due to this particular virus. Okay, smoking definitely damages the cells of your lungs. Okay, आपकी lungs की जो efficiency है, it will drop, it will create lung problems. Not only that, the recent research has also said that alcohol consumption is also bad for lungs. Okay, now there is a syndrome, there is a disease which is known as the acute respiratory distress syndrome. ओके, ARDS कहा जाता है उसको. नाउ acute respiratory distress syndrome, this is again caused because of chronic alcohol consumption. तो ये भी अभी एक रिसर्च में मैंने पढ़ा है. ओके, सो डेफिनेटली यू नीड टू गिव अप ऑन ऑल दीज थिंग्स. यू नीड टू मिनिमाइज अलॉट ऑल दीज थिंग्स. ट्राई करो उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करने के लिए, और बेटर होगा दैट यू गिव अप ऑल दीज हैबिट्स. ओके, ऑल दीज थिंग्स are definitely going to help you to develop good immunity. Okay, and it is very very important, believe me, in the future it is very important to develop a strong immune system, because आपको सबको पता है कि ये वायरस जो है, ये वायरस में चेंजेस भी आते हैं. और अभी जो राइट नाउ द वायरस विच इज़ देयर, उसमें से मैंने ये भी न्यूज़ में देखा है कि देर आर मेनी पीपल हु डोंट इवन शो सिम्टम्स. सो देर आर नो सिम्टम्स इन देयर बॉडी. ओके, तो ऐसे लोग भी है. सो लेट्स डेवलप आवर इम्यून सिस्टम. ओके, एंड लेट्स प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस वायरस, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम, it is very important that we work on the immunity and we improve our lifestyle. Correct? So this will be required in the future. Okay, so I hope you liked my video today, and I have answered all your queries about developing immune system, right? So please share my video, and also I would be waiting for your comments. Thank you so much. Bye.